So now sometimes there is a delay in recovery or sometimes that may lead to death also. वो हम लोग कैसे उसको देखेंगे कि अगर पहला लग्न बहुत वीक है एंड आरूढ़ लग्न भी मेलिफिक है, दोनों के दोनों जो है लग्न एंड आरूढ़ लग्न, अगर both are malefic, then also there is no chance of recovery, maybe either too much of delay or even death of the patient actually. Aru Lagna we have discussed, I think, yesterday, day before yesterday. So Lagna and Aru Lagna, if both are malefically disposed of, then it may lead to death of the native. Then 10th house is very afflicted. 10th house is the house of patient also. Sir, That but Lagna, sir, Lagna is doctor. Na, so we can Lagna is a doctor. So that indicates about that indicates about doctor also. And secondly, Lagna is important in any horary question. कि जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा आपका काम नहीं होगा, किसी भी कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, कि अगर लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तो आप सीधा नेगेटिव आंसर उसको दे सकते हो, बाकी कुछ चीज देखने की जरूरत ही नहीं। तो वही चीज ठीक है, डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन साथ में जो लग्न का स्ट्रांग होना भी जरूरी है उसका हमें पॉजिटिव आंसर देने के लिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। Then Saturn associated with the 8th house. What does it mean? Saturn associated with the 8th house. Normal case में अगर Saturn 8th house से associate होता है तो क्या होता है? लाइफ लॉन्ग हो जाती है, longevity के लिए अच्छा होता है। So it's a good for longevity. Yes. But we also know that Saturn is a lame planet. Recovery will be slow. Lame planet means कि आपकी मोबिलिटी को खत्म करके फिर आपकी लॉन्गेविटी देता है, आपको बिस्तर पर लिटाकर लंबे टाइम तक जब डेथ देता है। That is a bad point because Saturn may give you longevity, but we should keep in mind that it's a lame planet. It has an adverse effect on the mobility. और होता भी इसीलिए यही है कि जब भी शनि की दशा है, 7.5 है या कोई भी शनि का एडवर्स इफेक्ट होता है तो सबसे पहले हमारी जो मोबिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। yes. हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है, कहीं पैर में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा या कुछ और बीमारी हो जाएगी जिससे हम तो बिस्तर पे लिटा के मारता है। तो लंबे टाइम तक बिस्तर पे लिटा के जब लॉन्गेविटी तो देता है, बट द बेसिक नेचर वी कैन नॉट फॉरगेट। Sir, I have a question on this one. Yeah, please. So, as you said, if the Saturn is aspecting the 8th house, and the 8th house is for longevity, so definitely it will give a long life. Correct. But what if the Lagna is very strong? Just like let us say that the Lagna is like Aries. Lagna is strong, and the 8th house also the same. The Lord is Mars. देखिए, when I say Lagna is strong, it means there are chances of recovery. First thing, the patient will get recovered, and simultaneously, as you say that Saturn is also having an association with the 8th house. It means the recovery will be there, but it's a long illness, so it will take time. There will be delay in recovery. But recovery is there because Lagna is strong. It means 100% recovery is there. But because of the Saturn association on the 8th house is causing delay in the recovery. Okay, thank you. Yeah. So then, if somebody asks that after 5 months I will deliver a baby, so will I recover it fast or not? So can we answer that question? If somebody is going to deliver a baby and that person is asking that will I recover it fast or not? So you can yes, you can reply that question. Okay, I'm going to deliver a baby, and whether there are going to be any complications or not. Okay. So I have one question. So because this is for the future question, not the present one. जी.
So I have one That's right. question regarding 8th house. Saturn, जी if Saturn is there, and you said कि वो long illness देता है and बिस्तर पे लिटा के death देता है. So जी on the basis of horary, if Saturn is in 8th house, तो वो remedy हम दे के कुछ solutions on the basis of horary हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर सैटर्न वगैरह की रेमेडी करेंगे जी तो सर. थोड़ा फास्ट रिकवरी के लिए दैट मे बी हेल्पफुल. Okay, okay sir. Thank you sir. And Saturn is such a planet, even if you go to a hospital and someone gets admitted in a hospital, and you know, number 8 in numerology represents Saturn. So if you get a room of number 8, maybe 26 or 17 or 8 and all those things, you can experience yourself. You will not come out of the hospital very soon. It will take a long time. Sir, is it because of the number 8 you're talking about? Yeah, number 8 Yes. represents Saturn actually in the numerology. But sir, with the like I've seen it here in Australia a lot and other places also. Like for the Chinese, they consider like the number 8 very lucky. So what they try to do is they try to add up their mobile number and it comes up as 8 or the house No, number. lucky in what sense? I don't know. They're always Lucky, like house lucky, number 17, house number 8. They're just sold like. House is very good. If you want to stay in a good house, suppose I make a good house for me, and I wish that I should stay there for a long time, then the Saturn number is really good. But in the hospital, we don't want to stay there for a long time. So I'm talking from the hospital purpose. But for anything else, number 8 is good. Yeah. Otherwise, house ke liye bahut acha hai. And suppose you say about mobile. Yes, so you would like to have your mobile for a long time. Don't want to get it lost. And the bank account also. Yeah. And nowadays mobile are very costly. So naturally, I would like to have it for as much time as possible actually. So for those purpose, where the things are of the stable nature. So उनके लिए अच्छा है. But उस टाइप की चीजों के लिए नहीं है. जैसे रिकवरी है बीमारी से या आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो वहाँ रखे रहेंगे. आप बहुत टाइम तक आपको ठहरना पड़ेगा हॉस्पिटल में. Then जन्म राशि in the 8th house. Now जन्म राशि means it relates to natal chart. In the 8th house, afflicted with the malefics. If somehow the patient has the horoscope also, and you find that whatever is the Janma Rashi, it is in the 8th house, and it is afflicted with the malefic, then it may also result with the death of the native. Then exchange of Lord of 6th and 8th, exchange of disease and the death actually. So that also results in the death of the native actually. Moon in Mool Trikon sign. Moon is in the Mool Trikon sign, and the Lord of that sign is retrograde. It means which planet? Moon is in the Mool Trikon sign. What is the Mool Trikon sign of Moon? The Taurus. Taurus, and the Lord is Venus. The Taurus. The Moon should be placed in the Mool Trikon sign. It should be in the sign number 2, and the Venus should be retrograde. Then exchange of Lagna and the 6th Lord. Again, it indicates delay in the recovery. Retrograde planets in the 4th or 7th house. Retrograde planets in 4th or 7th house. Then Lagna is in the Prastyodaya sign, Malefics in the Kendra, and Moon in the 8th house. That also. Prastyodaya sign kya hai? There are 3 types of sign. One is Shirshodaya. 1, 2, 4, 9, 10. Yeah, rising from the head, rising from the back part, and rising both ways. They are known as Ubhyodaya. There are 3 types of sign, Prastyodaya, Shirshodaya, and Ubhyodaya. These are the signs. Prastyodaya signs are these 1, 2, 4, 9, 10. Shirshodaya is 3, 5, 6, 7, 8, 11, and Ubhyodaya is 12 sign. Naturally, if Shirshodaya is rising, it indicates success. Prastyodaya is failure, and Ubhyodaya is the mixed results. So the disease questions are simpler. Only you have to see these 4 houses, and that basis you can find out whether there will be recovery or not. Then now some female comes, whether my husband will recover. He's suffering from some problem.
So whether my husband will recover. So this is the chart you make at that time. And since the question is about the husband, so this house will become the ascendant. This house will become the first house, right? Then what is the position of this house? It's very weak, sir. It's afflicted with Sun and Saturn. It's afflicted. First, it is an aspect of Mars and Jupiter. Saturn also. Right? Saturn. And its Lord, what is the position of the Lord of this Mercury? Sun and Saturn. Mercury is afflicted with Sun, Saturn and Ketu. Ketu. So Mercury is badly afflicted here. Mercury is badly afflicted, or you can say Lagna is badly afflicted. And even the position of Moon, you see, what is the position of Moon here? With Ketu. Moon is in the 6th house and it is in afflicted with the Ketu. So Lagna, when the Lagna becomes weak, and I told you that that is a basic requirement, Lagna has to be strong. If Lagna is weak, then answer cannot be in the positive actually. So here the Lagna becomes weak actually, and that's why you can say that there is no possibility of recovery also. No possibility of recovery. So correct, we just see because the question of diseases are simpler actually, not so complicated. Only thing is ki, if you see these 1, 4, 7, 10 houses, their affliction, etc., you can definitely answer a query. So And sir, can I give my example for this disease one? हाँ बताइए. So my own example, I had COVID 2 months back, and I am not still recovered completely. So can I ask this question and just you can देखिए see? एक चीज मैं बताऊं आपको, जी. जब इस टाइप के पेंडेमिक्स वगैरह होते हैं तो उसमें इंडिविजुअल चार्ट इतना काम नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीवन इज अफेक्टेड. ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा भी खराब होगा तो इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम, और थोड़ा सा भी ठीक होगा हॉरोस्कोप में तो रिकवरी होने के चांसेस होते हैं. बट ये कहें आप कोविड क्यों हुआ मुझे, मेरे प्लैनेट की पोजीशन तो ठीक है, बट उसका हम आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि पेंडेमिक है. एवरीवन इज अफेक्टेड बाय दैट. ओके सर, तो होरारी में इससे नहीं पता चल सकता है कि आप कोविड से कोई रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं पता लगेगा. अगर क्वेश्चन आप पूछा जाए जेन्युइन क्वेश्चन उस टाइम में, तो डेफिनेटली यू कैन गेट द आंसर. सर इफ आई आस्क कि जैसे अभी इट्स बीन 2 months, मेरा my fever is still there. Okay, so let us try. Yeah. Let us try actually. Okay. There is no harm in trying. But sir, in the if you're looking at the Lagna chart, sir, then we will see if the dasha is good or not. दशा की जरूरत नहीं है इसमें. Let us make the chart actually of. So for Horary point of view, Yeah. Let us. I'm talking about the Lagna chart. If we were Today's, doing not the Horary, the other one, then we'll see the dasha, if the dasha is good or not. दशा को छोड़ देंगे अभी. तो नहीं, I'm making a Horary chart, not her birth chart. Yes, just for Horary point of view. Yes. Yeah, and time today is this time is 2:45. Okay. 250. 249. Okay. 249. 249. एक मिनट तो फर्क नहीं पड़ेगा. एंड रैली ये है पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स. अब देखिए क्या पोजीशन है. Saturn is aspecting. पहले हम लग्न को देख लेते हैं. लग्न की क्या पोजीशन है. सर ट्राइन में है, उसका लॉर्ड 7 का लॉर्ड, उसका लॉर्ड वीनस है और ट्राइन में है, और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है. जुपिटर का एस्पेक्ट है, एंड जुपिटर इज आल्सो इन द ट्राइन हाउस. और दूसरा ये है कि अगर हम लग्न को देखेंगे तो इसके ऊपर मार्स का एस्पेक्ट और सैटर्न का. ठीक है. और ये
Lord Sky is in a very good position and that too aspected by Jupiter from another trine. Yes. तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है लग्न की पोजीशन। लग्न की पोजीशन नेगेटिव नहीं है। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको पेशेंट तो ये है, इसकी क्या पोजीशन है? मून अपने साइन में, मून अपने साइन में है और मार्स सैटर्न देख रहा है, सैटर्न देख रहा है और केतु भी देख रहा है। तो ये जो सैटर्न देख रहा है या 3 मैलिफिक देख रहे हैं, इसकी वजह से डिले हो रहा है। इसकी वजह से जो रिकवरी में डिले हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि ये जो पेशेंट का जो हाउस है, बाकी सब हाउस ठीक है, लग्न भी ठीक है, ये भी ठीक है, और अगर हम इसको भी देखें ये वाला डिसीज को, तो ये भी काफी अफ्लिक्शन है 10th हाउस में जाके, और या 10th हाउस को भी हम कहेंगे काफी अफ्लिक्टेड है। तो दैट मे बी द रीजन फॉर डिले, जो हमने कहा अभी कि डिले फॉर रिकवरी, बट दैट इज श्योरिटी 100% कि यू विल गेट रिकवर्ड, बट ओनली थिंग इज कि इट मे टेक सम टाइम, देयर मे बी सम डिले इन द रिकवरी। या आंसर फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक फर्स्ट इज डॉक्टर इज वंडरफुल, ओके, वो तो हो गया इलाज, मेडिसिन भी ठीक है, बट ये दो हाउसेस हैं, डिसीज और पेशेंट, ये तो आपको पता लग गया रिकवरी तो हो ही जाएगी, रिकवरी तो हो ही जाएगी, बट यही है डिले इसलिए हो रहा है कि पेशेंट के ऊपर सारे मैलिफिक का एसोसिएशन, सारे मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। सर, तो इन दिस केस रेमेडी करना चाहिए मार्स का एंड सैटर्न का, मार्स एंड सैटर्न का, राइट, मार्स एंड सैटर्न का रेमेडी करेंगे तो, और इवन जुपिटर का। हाँ जी, केतु का रेमेडी? केतु कितना परेशान नहीं करता, बेसिक मार्स एंड सैटर्न है, क्योंकि ये नीच का भी है मंगल, और सैटर्न और केतु का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट मार्स और सैटर्न की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर आप जुपिटर भी कह रहे थे? जुपिटर का जैसे पूजा वगैरह करेंगे तो इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, ठीक है सर, थैंक क्योंकि यू। जुपिटर जो है ये तीनों ट्राइन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लग्न को भी, इसको भी और इसको भी, तो जुपिटर इज फेवरिंग एक्चुअली। तो नेचुरली अगर जुपिटर को भी अगर हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो उसका भी हमें फायदा होगा। ओके, थैंक यू सर।